Good morning, dear students. Welcome back in your computer class. In this video, we will discuss chapter number 9, which is the part of your half-yearly syllabus. So here, the name of the chapter is your Program Error Types and Basic Exceptional Handling. We have already covered the error and types of errors. But in this chapter, we will discuss this one more time and the ways how to handle these errors. So let us start. Here is the definition for error. What is error? And side by side you can write the notes, you can make your notes also in the copy. So what is error? Error is also known as bug. Bug or error means the same thing. That is anything in the code that prevents a program from compiling and running correctly. Means if your program doesn't compile or do not run correctly or do not execute correctly, that means some kind of mistake is there in your code, then that is known as your error. Some program bugs are catastrophic in their effects, while others are innocuous, and still others are so obscure that you will ever discover them. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. Up to the definition part, that means up to here you write the definition for error. Give the heading errors and write the definition. Then you will write from here, there are broadly three types of errors: compile time, run time, and logical error. Right up to here. After that, we will discuss about compile time error. Now that errors that occur during the compilation time are known as your compile time errors. That is sufficient to define. ठीक है? So when a program compiles, its source code is checked for whether it follows the programming language rules or not. Two types of errors falls into the category of compile time, that is your syntax error and your semantic error. Now what does it means? It means when you will write a program and you will click on the compile button, so you can see if you have done any mistake during the coding time, ठीक है, in the source code, then that type of error is known as the compile time error. And basically it is divided into two types, that means your syntax error and your semantic error. If you will make any kind of mistake in these two types, अगर आप syntax में या semantic में कोई mistake करोगे, so this type of error will result. Fine. Then we will discuss about syntax and semantic. So here you can see the definition for this. Give the heading of syntax error and write it. Syntax errors occurs when the rules of the programming language are misused. Rules of the programming language means because as you know, when you write a program, so there is a particular fixed format to write a program. If you will not follow that format, then obviously that will be a syntax error. For example, if I write a int, now this is against the syntax or against the format of a programming language. Why? Because it says, rule क्या कहता है programming language का, कि first you define the data type, then you declare the variable. But here what I did the mistake, हमने यहाँ पे a लिया है ऑफ, मतलब यहाँ पे इंटीजर टाइप बाद में लिखा है और a को पहले लिखा है. सो दिस इज सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट, सो दैट्स वाई इट इज़ अ सिंटैक्स एरर. इन द सेम वे इफ सेमीकोलन इज मिसिंग, then that is also syntax error. Look at here in the example. Examples are given here, or you can write your own also, because you have done a lot of program in your 10th class also and you know it already very well कि syntax errors हमारी कब आती हैं और जो errors आती हैं वो कहाँ पे display होती है, at the bottom of the screen. तो जो भी types की errors आपने observe की हैं अभी तक, वो आप कहाँ पे लिख सकते हो, under your compile time error. Example जैसे कि क्या हो सकता है, देखो, string not enclosed in double quotes. Look at here, string str is equal to this. Now here we are using double quotes, but here I forgot to write double quote. I put the single comma sign only. So that is a type of syntax error. ठीक है, बिकॉज रूल क्या कहता है कि स्ट्रिंग अगर आपको डिक्लेयर करना है तो उसको डबल क्यूट्स के अंदर होना चाहिए, बट अगर आप डबल क्यूट्स यूज़ नहीं करोगे, सो दैट इज़ अ सिंटैक्स एरर. इन द सेम वे लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस. Parenthesis means brackets. So see here in this example,
one opening bracket and two closing bracket. Rule says what? That number of opening brackets and closing bracket must be same, and if you are writing only one opening bracket and two closing brackets, so this is a type of syntax error. Fine. So these two examples along with the definition you can mention here. So definition we have covered up to here, and then these two examples. Make proper notes of this chapter also. Next one. Next example is given, int default is equal to 10. Now as you know, default is what? Default is a keyword. Default is a keyword, and we cannot use the name of the identifier as the keyword because keywords are the words which has a special meaning for a compiler. ठीक है, and we cannot use those reserved words or those keywords as the identifier name. So that's why it is also a incorrect way to declare the variable. Next, missing return value means int max int i comma int j. यहाँ पे देखिए int max int I comma int j, that means you are receiving two parameters, one is of int I and one is j, both are of integer type, but when you are writing return statement inside this function, so you are not returning anything, but the function prototype says what? You are returning one integer type of value. तो इसलिए ये भी किस टाइप की एरर होगी? सिंटैक्स एरर. अदर तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे कोई वैल्यू को रिटर्न कराना पड़ेगा, एंड इफ यू डोंट वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू देन यू हैव टू राइट हियर void. Clear? Next is your semantic error. Semantic error says what? Ki it occurs when the statements are not meaningful. When the statements are not meaningful, or you can write the definition from here. Semantic refers to the set of rules which give the meaning of a, which gives the incorrect meaning of a statement होगा, I think ये, which gives the meaning of a statement. Correct है ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो. When the statements are not meaningful. ठीक है. Now see, one real time example is given here. It says what? कि for instance अगर हमने कोई ऐसा statement लिखा है कि सीता plays guitar, is syntactically and semantically correct, दोनों ही तरीके से correct है, as it has some meaning, but the statement guitar plays Sita is what? Syntactically correct but semantically incorrect. ठीक है. तो ये एक रियल टाइम एग्जाम्पल गिवन था, लेकिन अब आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग में इसको कैसे समझाओगे? यहाँ पे देख लीजिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. फर्स्ट इज यूज़ ऑफ नॉन इनिशियलाइज्ड वेरिएबल. नॉन इनिशियलाइज्ड वेरिएबल का मतलब क्या है? देखो कि आपने यहाँ पे इंट आई को डिक्लेयर तो किया है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसको आपने जब वैल्यू ही इनिशियलाइज नहीं की है, कुछ भी वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड किया आई के अंदर, तो यू कैन नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई. So that's why variable I is not initialized here, so we cannot increment it. So this is a type of semantic error. Example number 2, int a is equal to hello. Int a is equal to hello is a type of, again because यहाँ पे क्या देखो, hello किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है, and a is of what integer type, so you cannot assign a string type of value into integer. Fine. Semantic error. नेक्स्ट वन, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, सपोज ये डॉट डॉट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है दैट यू हैव टेकन सम स्ट्रिंग. सो सपोज यू हैव टेकन द स्ट्रिंग एज हेलो इनसाइड दिस एस, एंड इफ यू आर राइटिंग इंट ए इज इक्वल टू 5 माइनस एस, यानी कि 5 माइनस हेलो, इज दैट पॉसिबल? कैन यू सब्ट्रैक्ट स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम इंटीजर टाइप? नॉट एट ऑल. सो दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो नॉट valid statement and it is a semantic error. So any two examples you can write along with the definition, that is sufficient. Next one,
how to handle the compile time error. Now we have studied that what is compile time error and how many types of compile time error are there. Now the next thing is how to handle these type of exception errors. अगर ये error आती हैं तो कैसे उसको डील करोगे. देखो बहुत ही ईजी है, आप करते हो. कैसे करते हो आप जब compile time error आती है तो आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, आपने कोई सोर्स कोड लिखा, सपोज आई हैव रिटन दिस सोर्स कोड, right? Then you will click on compile button on the top of the screen. There is one button ना, there is one icon for compile. You click on the compile option. जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप देखते हो बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर क्या होता है, यहाँ पे कुछ एरर्स डिस्प्ले हो जाती हैं. एंड वन बाय वन यू विल चेक फॉर द फर्स्ट एरर. यू विल गो अगेन बैक इनटू योर प्रोग्राम एंड यू विल मेक द करेक्शन. देन अगेन यू विल रिकम्पाइल द प्रोग्राम. फिर से अगर कोई एरर होगी किसी लाइन में तो वो फिर डिस्प्ले हो जाएगी नीचे स्क्रीन पे. आप फिर से अपने प्रोग्राम में जाएंगे एंड यू विल मेक द करेक्शंस अगेन. इन द सेम वे you will keep on repeating the process again and again until and unless your errors has been removed. ठीक है, तो आपके जो भी एरर होंगी जब तक वो रिमूव नहीं हो जाती है, यू विल कीप ऑन compiling your program. So this is the way how to remove the compile time errors. There is not any other way. आप और कोई तरीके से नहीं रिमूव करते हो. कंपाइल टाइम करने के लिए आपको बार बार प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा और उसको मैनुअली क्या करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज द वे. Then the next one is, and this see one more thing is that you can write this one in your own language, that if the compile time error will occur what you will do. ठीक है. Next here is your runtime errors. Now runtime error क्या होती है? Errors that occur during the execution of a program. जो कब आती है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आर नोन एज योर रन टाइम एरर्स एंड दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट. इनको डिटेक्ट करना और इनको रिमूव करना दोनों ही क्या होता है, हार्डर होता है, क्या होता है, डिफ़िकल्ट टास्क होता है. सम रन टाइम एरर्स स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ऑल्सो. कुछ तो एरर्स ऐसी होती हैं जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देती हैं, विच देन रिजल्ट्स इन टू वॉट, क्रैश्ड और एबनॉर्मली टर्मिनेटेड प्रोग्राम. समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी तो क्या होता है कि आपकी जो एरर्स होती हैं, रन टाइम एरर्स जो आती हैं, वो क्या होती हैं कि आपके प्रोग्राम को एबनॉर्मली क्या कर देती हैं, टर्मिनेट कर देती हैं. ठीक है, मतलब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और बीच में कुछ आउटपुट उसने दिया और फिर एकदम से हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे प्रोग्राम से बाहर आ गया. ठीक है, तो इस टाइप की एरर्स जो होती हैं, या फिर क्रैश हो गया, आपका नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया सिस्टम, तो ये सब क्या है, ये किस टाइप की प्रॉब्लम है, ये रन टाइम एरर की प्रॉब्लम है. ठीक है, तो रन टाइम एरर क्या होती है, दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. दैट इज द सफिशिएंट डेफिनेशन फॉर योर रन टाइम एरर. Then next one is, see you can write the definition from here also. Runtime error is an error that occurs during the execution of a program. In contrast, compile time error occurs while a program is being compiled. ठीक है, तो एक एग्जीक्यूशन के टाइम पे आती है और एक कंपाइलेशन के टाइम पे आती है. फिर इसमें एग्जांपल्स भी गिवन है फॉर द रन टाइम एरर. फर्स्ट इज योर डिवाइड बाय ज़ीरो. डिवाइड बाई ज़ीरो में आपने क्या लिया है, वी आर टेकिंग 3 इंटीजर वेरिएबल्स a, b and x, and a we have initialized to 10 and b we are going to read from the keyboard, and if we are writing the statement x is equal to a divided by b. So if you can see here that if we are going to enter the value of b by the keyboard, so the user can give any type of value, yes or no. So that means user can give the integer type of value or it can also give the 0 1 2 0 also. ठीक है, and you know when you will divide any number by 0, so it is not possible, it is actually equivalent to infinity. It is equivalent to infinity and it is not possible. So that is the only reason that it will result into error. It may result into error, है ना, हो सकती है. क्यों? Because if you will pass 0, so it will definitely give the error. अगर आप कुछ और नंबर ले रहे हो तो ये नहीं देगा, बट अगर आप 0 लोगे तो वो एरर दे सकता है. इसलिए डिविजन बाय 0 किस टाइप की एरर है आपकी, रन टाइम एरर. So this is your first example. See, division by 0 error will occur only if user has entered value 0. अगर 0 वैल्यू एंटर हुई है तभी वो क्या करेगा, आपका मतलब एरर जनरेट करेगा रन टाइम, अदरवाइज नहीं करेगा. द सेकेंड एग्जाम्पल इज हेयर, फाइल डजेंट एग्जिस्ट. तो फाइल डजेंट एग्जिस्ट का क्या मतलब हुआ कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डू नॉट एग्जिस्ट
अब ये जो सिंटैक्स है फाइल रीडर एफ इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, ये अभी तक आपने नहीं किया है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एनुअल सिलेबस बिकॉज सो देर इज़ नो नीड टू राइट दिस एग्जाम्पल, ठीक है। बट अगर इसको मीनिंग आपको समझना है तो मीनिंग ये बता देती हूँ कि फाइल रीडर क्या एक क्लास है फाइल को रीड कराने के लिए। अगर आप कोई फाइल रीड करना चाह रहे हो जो आपके पास पहले से बनी हुई है सिस्टम के अंदर, तो उसको रीड कराने के लिए एक ऑब्जेक्ट हम क्लास बनाते हैं फाइल रीडर। फाइल रीडर का ये एक ऑब्जेक्ट है एफ इज़ इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, जैसे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं इन द सेम वे। और किस फाइल को रीड करना है, इस फाइल को, यानी कि ये इस फाइल का एक नेम है, एक नेम्स डॉट txt नाम की फाइल है जिसको आपको रीड कराना है, जिसके अंदर क्या है, नेम्स ऑफ सम स्टूडेंट्स आर स्टोर्ड। सो यू वांट टू रीड द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स एंड सपोज इफ दिस फाइल नेम्स डॉट txt डजंट एग्जिस्ट इन द सिस्टम, अगर वो है ही नहीं कंप्यूटर के अंदर और आप उसे ओपन करना चाह रहे हो, तो वो भी किस टाइप की एरर होगी, रन टाइम एरर। क्लियर है। The third example is here dereferencing of a null reference, dereferencing of a null reference। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई ऐसी वैल्यू, मतलब आप एक नल वैल्यू को रेफ़र कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग s एंड s स्टोर्स द वैल्यू नल, ठीक है, एंड s डॉट कॉन्कैट ऑफ a, s डॉट कॉन्कैट ऑफ a, यानी कि आप, मतलब कॉन्कैट का फंक्शन क्या होता है, कॉन्कैट इज़ यूज टू मर्ज, कॉन्कैट इज़ यूज टू मर्ज दी टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो आपके अंदर जब पहले से नल, नल का मतलब होता है कि किसी को रेफ़र नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको फिर कॉन्कैट भी नहीं करा सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि जो कोई चीज़ जब किसी चीज़ को रेफ़र ही नहीं कर रही है, उसके अंदर कुछ स्टोर ही नहीं है, तो आप उसको कॉन्कैट कैसे कर सकते हो। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न, क्योंकि एस के अंदर कितना है, नल है, दैट मीन्स एस इज़ नॉट पॉइंटिंग टू एनी मेमोरी लोकेशन, नथिंग इज़ देयर, सो यू कैन नॉट परफॉर्म द मर्ज ऑपरेशन, फाइन। सो दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ योर रन टाइम एरर। अगर आप इसको करेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे यू कैन टेक एनी रैंडम स्ट्रिंग लाइक दिस। Now if you will perform the concat operation, it will work perfectly and there will be no error, neither compile time nor your runtime error. Clear है। उसके बाद इसमें given है how to handle the runtime error. Up to here we will leave it for today. So see, by default Java terminates your program displaying the stack trace if any runtime error occurs, but a better way of handling these errors is through exceptional handling. Exceptional handling is the way to handle the runtime errors, and this one we will discuss in the next class what is exceptional handling actually, ठीक है। So we are leaving up to here, that's all, thank you, and yes, make the proper notes of this class.